Assalamu alayka ya شیخ العالم پیج پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اور آپ اپنے دوست احباب کو، اس کا لنک موجود ہے شیخ العالم پیج پر، تو آپ اپنے دوست احباب کو ٹیکسٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر شیخ العالم پیج پر اس پروگرام کو لائیو واچ کر سکتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں دربار عالیہ نیریاں شریف کے چبلستان کے ایک عظیم پھول جناب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حماد صدیقی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور انگلش زبان میں ینگسٹر کو 19 اپریل کے حوالے سے ایک شارٹ میسج دیں۔ Respected ulama ikram, my dear brothers and sisters, I begin by extending salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, time is very limited, so I shall be concise in my short message. Inshallah, on the 19th of April, Allah Almighty once again has blessed each and every single one of us to participate in a beautiful gathering, in a beautiful majlis, in which we remember Allah Almighty, we remember the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But moreover, it is more special, it is more beloved, since we are going to be under the company, under the suhbah and the guidance of our Shaykh. And if the one who leads the gathering, if the one who overlooks the majlis, if he is accepted in the bargah of Allah Almighty, then undoubtedly the majlis, the gathering, the zikr of Allah Almighty and the zikr of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the participation of every single believer and Muslim on that day will also be accepted in the courtyard of Allah Almighty and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So I implore and I encourage each one of you, my dear brothers and sisters, and those who are listening to this, who are not present, that you spend your wealth for the sake of Allah Almighty by spending it in the way of the Prophet ﷺ. And you participate in this gathering
because it is not only beneficial for you in terms of your worldly success, but also it will help you and it will be a means of shafa'ah for you on the Day of Judgment. And I shall end my speech, my short message, by reciting a hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام, in which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, none of you is a true believer, none of you has perfected his faith, none of you have attained kamal in your iman until I am more beloved to you than your father, your children and every single person on this world. Meaning that if we want to perfect our faith, if we want to achieve kamal in iman, then we have to love the Prophet ﷺ more than anything else on this world. And by the way, a qawl of Yahya ibn Mu'adh rahimahullah comes to mind, who said, لَيْسَ بِصَادِقٍ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّتَهُ وَلَمْ يَحْفَظْهُ. A person who claims to love but has no means of preserving that love is not a person who speaks the truth. So if we claim to love the Prophet ﷺ, but we have no means of preserving that love, then we are not speaking the truth. So how can we speak the truth? How can we preserve our iman and love for the Prophet ﷺ? It is by amal. And the best form of amal that you can do is by attending the gathering on the 19th of April, in which we will remember Allah Almighty, we will remember the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and especially we will be under the guidance of our Shaykh. We will learn from their teachings, their ta'limat, and we will gain benefit from their faizan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. माशाअल्लाह में मुल्तमिस हो जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कमरुल हाशमी साहब की खिदमत में क्या तशरीफ लाए और अपना पैगाम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि. अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन. हज़ूर शेख आलम, खुलफ़ाए किराम, उलमाए अज़ाम और तमाम हाज़रीन जमा, आयत करीमा जो मैंने पढ़ी, मुझे कोई लंबी तकरीर नहीं करनी, पैगाम देना है. ये पैगाम ये है, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया, जिनके पास ईमान है, जिनके पास इश्क़ रसूल है, उनको ये हुक्म दिया, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और मेरे सच्चे बंदों के साथ हो जाओ. अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने नूरानी जलवे वाला, कमाल इरफान वाला, मेरे आका का आशिक, इरफान वाला, कामिल वली अल्लाह, जिसने अपनी शख्सियत को, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपनी जान को, अपनी बुजुर्ग उम्र को इश्क़े मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में फना करके रख दिया है. तो उस हस्ती का पैगाम ये है कि आओ तमाम आशिकान रसूल बर्मिंघम में 19 अप्रैल को इकट्ठे हो जाओ. तुम घर से निकलोगे इबादत है, गाड़ी में बैठोगे इबादत है, जुलूस में आओगे इबादत है, मुर्शिद का दीदार करोगे इबादत है, नारे तकबीर लगाओगे इबादत है, नारे रसूल लगाओगे इबादत है, और जब जुलूस से चल के दुरूद व सलाम पेश करोगे तो ये इबादत है. तुम्हें इबादत के लिए ये वली कामिल बुला रहा है. दमे दरहमे सुखने अपने मुर्शिद का साथ दो. अगर तुम साथ दोगे तो फिर जन्नत में इनके साथ होगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. नारे तकबीर, मैं
मुलतमिस हूँ जनाब साहिबजादा मोहम्मद हसन सिद्दीकी साहब की खिदमत में कि आप तशरीफ लाएँ और नातिया अशार पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या मुस्तफा